ओके, गेस्ट अभी तक नहीं आया और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ गेस्ट की। आप कॉल सुन सकेंगे मैं क्या कह रहा हूँ उसको। तो 1 मिनट लेट हो जाए तो इसका मतलब गेस्ट यूजली 1-2-4 मिनट पहले वेट कर रहा होता है मोस्टली, लेकिन कोई बात नहीं। अवैस, इनका नंबर पहले वेरीफाई करके रखा करो, ये सेल फोन है या दूसरा है। जी सर। ओके। Hi, you reached the voicemail of Dr. J. Laguardia. Appreciate the phone call. However, I'm unavailable at this time. So at the beep, you know what to do, and I will return your phone call as soon as I can. Have an amazing day. At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Hi, doctor. This is Siddique, the host of Growth Hacking Secrets. I'm ready for your guest appearance on the show. Call me, text me at 770-648-4371. That is 770-648-4371. In case you can't make it today, no worries. Happy to reschedule for mutual convenience time. Okay, let me know. Thank you. अभी मैं इसको टेक्स्ट भेजने लगा हूं कि आई एम रेडी एट दिस नंबर, इस लिंक पे। क्योंकि कई दफा लोग कॉल नहीं सुनते, यहाँ पे अमेरिका में कॉल पे रिस्पांस लेना मुश्किल है, उसको पता नहीं होता बंदा कौन कॉल कर रहा है, तो उसके लिए टेक्स्ट भेज दे तो उसको पता, ओ अच्छा अच्छा मैंने तो इंटरव्यू किया, तो भूल जाते हैं ना लोग। ओके, टेक्स्ट भेज दिया। हाँ यूसुफ, जब तक वो बंदा नहीं आता तो देर बात कर लेते हैं। हाँ जी यूसुफ, हेलो। हाँ जी अबरार, क्या समझ आई? सर यही कि उसको अगर एक जगह से रीच नहीं कर सकते तो उसको 2-3 जगह मैसेज छोड़ दो। कभी कभी अनरिस्पॉन्सिव होते हैं तो दोबारा भी उसको इस तरह फील कराना कि दोबारा भी हम इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। ये क्यों करते हैं इस तरह? मैं भी अपसेट हो सकता, टाइम तो मेरा भी जाया हो रहा है। मैं क्यों नहीं अपसेट हुआ? क्यों करते हैं? ये लेट क्यों होते हैं सर? नहीं वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अपसेट ना होना क्यों जरूरी है सर? ताकि आप जो उनसे है अपना अपना जो माइंड है आप उसको फोकस रख सकें, क्योंकि आप सेट हो जाएंगे तो आपका जो थिंकिंग है सीधी नहीं आप कर सकते। बिल्कुल ठीक, दैट्स वन रीजन। एनीथिंग एल्स? इट्स गुड आंसर बाय द वे, but I'm very happy to hear that. There's a big change in you, man. थैंक यू सर। और सर ताकि सर उसको कल को उसको याद है कि ये बंदा मेरे से अपसेट नहीं हुआ था ये, और वो उसको ज़हन में रखे कि मैंने उसको, ताकि उसको एक एहसास है कि मैंने ये नहीं भी आया तो ये बंदा मेरे से अपसेट नहीं हो रहा। और ये एक अनयूजुअल सी चीज़ है कि नॉर्मली तो उसको मेरे से अपसेट होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे से नहीं हो रहा, तो वो इसको इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का इसको। जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर है। क्योंकि जो बंदा, बिल्कुल यही है, यही मेरा जवाब है। जो बंदा आपके पास नहीं आया
अपसेट होकर उसकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी हो रही है? अपसेट होके उसी के नहीं, अगर मैं अपसेट हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसकी हो रही है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उसका हो रहा है। बिल्कुल सर, आपका आएगा क्योंकि उसको तो पहले इसने कर दिया जो करना। जो करना था वो कर दिया है। हाँ जी। तो फिर अपसेट होने की वजह कोई है ही कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। वो टाइम भी जाया हो गया, सेहत भी खराब कर लो, दिमाग भी खराब कर लो, रेस्ट ऑफ द डे ओ माय गॉड एक बंदा सी अज उन्हें आना सी, वो स्टोरियां सुनाई जाओ अपने आप में गल्लां कर रहे, ही डजंट केयर, इफ ही केयर ही वाज हैव बीन विद यू राइट अवे। ठीक है, तो यू हैव अ जीरो एक्सक्यूज टू गेट अपसेट एंड एनीथिंग। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। क्लाइंट ने साइन अप करके पैसे देने से नहीं देते, हु केयर्स। वो पहले भी क्लाइंट नहीं सी, हुन भी क्लाइंट नहीं, लॉस क्यों है? दस कुछ भी नहीं, कोई लॉस है ही कोई नहीं। लाइफ गोज ऑन। सही होगी गल। बिल्कुल। ये बड़ी जल्दी सीख लिया यार तुम, हैं? लेकिन ये फीलिंग कितनी अच्छी आ रही कि इंसान ने अपसेट नहीं हो गया तो जिंदगी वैसी बदल जाती है। बाकी कुछ सीखो ना सीखो, पैसे बढ़ने बढ़ने, साड़ी जिंदगी का बड़ा मसला ही है। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ अपसेट है, रोड ਤੇ जाओ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਲੈਫਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ, 3 ਲੇਨਾਂ 2 ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 6 ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 3 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल ऐसे ही है सर। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? बेचैनी ਕਾਦੀ? ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਦਲਣ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਓਕੇ, ਆ ਗਿਆ। Okay. Dr. J, good to see you, man. Good morning. How are you doing? Excellent, excellent. I'm so glad you made it. Yeah, I was searching for the link. I couldn't find the email with the link in it, but finally I did. Sorry about that. It's all good. It's all. I'm so glad you made it. Otherwise, I was happy to reschedule. You got my text? Text? No, I did not. Okay, I send you the text. You may want to look at that. Okay. No, I'm good. Okay, excellent. You go by the Dr. J. Laguardia, Dr. Laguardia, J or Dr. J. There are so many combinations when somebody is a doctor, so I want to make sure. How do you go by? Yeah, Dr. J. Dr. J. Okay, excellent. Second. Our call is being recorded. Is that okay? Yes. We are not live yet. Our call is being recorded. My team is watching you. Excellent. Yeah. We have not spoken bad about you yet because you were late. We have not spoken anything. Okay. I just want to let you know. It's on record. It's on recorded call. I can even share with you if you can understand what I was talking. I was not speaking English for the same reason. Even though we talk bad about you, you won't understand it anyway. So. So, doctor, I need to understand your business a little bit before we go live. Is that okay if I ask you a few simple questions? Of course. Okay. And some questions will be financial, some may not be financial. However, the whole idea is not to look at your money. I'm not asking for money. However, I want to know, because being a growth hacking secret show, we want to know how much you have achieved at a certain level. Financial is a part of it. You know, then we know how we evaluate your answers from the questions coming from. That's my angle. Are you okay with this? Of course. Okay, call will be recorded, whole thing is available to my team, and also people, there are some people are learning how to do interviews. They can learn from that, how I can connect myself. That's how I keep myself accountable. Okay. So you have seen all my questions? I have, yes. Okay, and you are ready for the answers, is that right? Yes. There are 2 questions I need to know the answer before we go live. And here's the first question. What's the impactful business book you have read? I need to see the cover of that book, please. Oh, you need to see the cover of the book. Yeah.
It's Think and Grow Rich. I don't know if I have a copy out here. Okay. I have one at my home. I don't have one here. Okay, you can This is I'm in my studio where I record. I respect that. So you can show me on your phone. That's okay too. Okay, wonderful. Wonderful. When I ask this question, I need, please show the cover and then start talking. Okay. Okay. And what's the website? Is behind your head. So you may want to move a little bit so people can see your website. Yeah. powerpassionprosperity.com. Okay. Correct. Understood. So how long you have been doing all this? Well, I've been an entrepreneur for 32 years. Oh my God. You already beat me on the number of years on experience. And what do you do for them? Well, I have multiple different businesses. The one that I actively work is my consulting business, podcast business, where we help entrepreneurs grow personally and professionally, and create basically create the lifestyle of their dreams. Okay. And how do you do that? Do that with our consulting. I do that with courses and programs and seminars and speaking and books. So any way we can touch them and inspire them, change and growth in their life. Just a high, what's the most premium service you have, like a consulting or courses or what? Yeah, it's our executive coaching. It's our one-on-one coaching. And if we have to send you a client for that one, how much you kind of range wise charge them? That one's $1,500 a month. $1,500 a month. And Yes. do you accept new clients or do you already have enough one-to-one? I do. Well, obviously they have to be screened, make Yeah. sure that they're the right client for us. But it's a small group. So And what's the next one down? is our group coaching. How much? So that one's $599 a month, and it'll be up to 10 people in a group. Okay, this is good. So you already have enough number of groups in that, or you're looking for more clients in that? We're always expanding because we're adding coaches. Oh, So right now we have 3 coaches, and we're going to be adding additional coaches in the future. So always looking to grow and expand. If someone can send you more people to in your group coaching, so do you compensate them as a referral affiliate commission, or Yeah, we do have an affiliate program, 30% on their sign up. is it on first month only or for the life of the account? It is for the first month, and then we do 10% after that. 30% of $600 will be $200. Then the 10% of $60 a month for after that. Correct. Okay, so $200 plus $60 a month, and that's for the life of the account, or just like a few months and then closed. That's for the first year. And if they renew with you for second year, you don't pay them. Correct. Okay, understood. Understood. Very good. So how many more group coaching students you're looking for? We're going to be starting a new group soon. So we have, I think 4 people already signed up. So we add another 6 easily in the next few weeks. Do you do any webinars? Pardon me? Do you do any webinars? Yes, we do. Who is your ideal client for the webinar? Again, entrepreneurs, growth-minded people. The next one we're doing a financial summit. And so we'll have experts on finances, financial mindset, financial tactics, passive revenue, that kind of thing. So we'll do family summits. We've done growth-oriented summits, financial summits. So yeah. How many guests shows up on the summit? How many guests usually done? Typically it'll be 6 plus myself. So I'll moderate and host. We'll have 6 different speakers, and then I close out the event. Okay, and how many people register for that event? Just a high level. As far as how many people we have on the summit? Yeah. 75 to 100. Register or show up? Show up.
show up? How many people you register? Pardon me? How many people register and then how many people show up? What's the percent? Oh, register, we're usually about 80% of register show up. How is it a paid one or free one? It's paid. How much? Depending on the summit, we are in that $97 range typically. Okay. And each speaker is going to sell something, or you are going to sell, but they just present, or how does it work? No, each speaker is afforded the opportunity to share a program or a course or their contact information. Okay, they don't sell. They don't sell, but they can share their information. Okay, and when they sell later from somebody outreach to them, you make a commission on that, or no? Correct. And commission is the same with everywhere, or is it different? Depends on the individual. I respect their, their process, but typically it's about 30% on the sign up. That's typically what the affiliates are. Understood. And you get paid from all of them, or you have to hand them check in the mail thing? Yeah, all of them. Huh? All of them. You have to remind all of them? Well, every once in a while for sure. Yeah, okay, understood. However, you get paid eventually from all of them, or there's some people they turn out to be they don't want to pay? Some pay monthly, some pay annually. Okay, good. So you got a good diversified source of income coming from all over. Yes, we do. Excellent. And how do you get to those 300 people register? Like 100 people register for that one. How do you market that? Social media ads. Obviously, we use our email database. We network through some of our affiliate partners who are going to be on. So if we have six people who are going to be speaking, they promote it through their networks as well too. So that's the advantage of collaborating with other great people who have good followings, is you can build up your following as well. Yeah, understood. Dr. J, I got the answers to my questions. I understood now, so it's good. So I'm ready for the interview. There's two. You got the book cover on your phone? Grab it here. Yes. Yeah. Yep. And there's one more question. I want to know the answer. How young are you? I am 18 with 39 years of experience. Oh my God! Thank you. How many interviews you watch? Pardon me? How many interviews you watched to prepare for this one? Just one. Just one. So you got this question right. So what is the ideal outcome you want from this interview? Just to make sure I try to deliver it. I can't promise it will be delivered. However, that I will work on that goal, make sure it happens. My whole objective, anytime I do these types of podcast interviews, is just to provide great content, inspire people, to help them, inspire them just to step up and be a little bit better today than they were yesterday, and then share how people can connect with us. I just love to enjoy and just to share content. Understood. At the end of once we are done with this, it should not take more than 15 minutes. And once we are done, if you like to have more people register for your summit, more than 100, 200, 300, 500, if you can handle it, I have no idea if you can handle it. We can have a follow-up call for some other time where we can discuss that. We can help you to get that number to much higher number if you like. That'd be fantastic. Once we have the date scheduled and our speakers finalized, I'll absolutely do that. Thank you, Siddique. I appreciate that. Okay, and maybe you never know if you are missing one speaker. If you never know, it could be me. Who cares? So. Sure, why not? Yeah, why not? Okay, I will learn with you directly. So I'm ready to go live. So you are the CEO and founder of Triple Life. Triple P Life. What's the P? P is for passion. Okay. Oh, Triple P Life. Power, passion, prosperity. Dr. J. Laguardia. Okay. Thank you. Let's go. Let's have some fun together. Okay. Let's do it. Don't be serious. Relax on an interview. I'm always relaxed. Okay, let's go. I bring you in a moment.
Greetings and welcome to Growth Hacking Secrets. I'm your host, Mohammed Siddique from Atlanta, Georgia, and the co-author of New Success Secrets, available on Amazon. On this episode, we have a special guest, Dr. J. Laguardia. Dr. J is the CEO, founder, and Triple P Life and Power, Passion, Prosperity. Please join me to give a warm welcome to our guest, Dr. J. Doctor, welcome. Welcome. Thank you, Siddique, for having me. I'm very excited to be with you today and your audience. Feeling is mutual. Let me start with this. Where were you? What happened? Who were you surrounded with that inspired you to do what you do today? In life, there's seminal moments. And particular one that I'll share with your audience today was I was sitting in my office, my first business. We've been in business a couple of years. We were struggling mightily. My wife was my business partner. Marriage was on the rocks. Relationship with the kids were just, it was terrible. My health was terrible. And I just wasn't enjoying being an entrepreneur. I actually thought about getting out. And a friend of mine had suggested I speak to a coach that he had hired. I thought, well, at this point, what do I have to lose? And he called me. I got on the phone. I explained to him everything that was going on in my life, my business. And not surprisingly, it was everything outside myself. I blamed everybody for everything that was going on except the one person who was involved in all aspects of it, which of course was me. And about 5 minutes later, there was dead silence on the line. And I thought he hung up. And I said to him, "You still there?" And he goes, "Yeah." He goes, "I know exactly what's going on in your life and what we need to do." And I was like, "Great, tell me what it is." He said, "Your life and your business are waiting for a leader to show up, and it's not you." And at that moment was the first time in my life somebody ever held me accountable for the decisions I made. First time I held myself accountable for the decisions I made. And from that moment on, I decided to understand that everything that was going on in my life was a direct reflection of my thoughts and the actions and behaviors that I've taken, and no longer to blame it on someone else. From that moment on, I started to immerse myself in growth, personal and professional development, and life really changed significantly after that. What are the top 3 mistakes to avoid? Well, for me, number one is get your ego out of the way. As an entrepreneur, we have that hustle mentality. We're excited and passionate in most cases about starting a business, but we don't know all there is to know. And there's an amazing network of people out there who are way smarter than I was. And if I was smart enough to hire them or to learn and study from them, I could have experienced success much quicker and saved myself a lot of pain and anxiety. Literally, that almost cost me everything in my life. And so get the ego out of the way so you can learn from other people who are smarter and avoid what you want to do. Number 2 is learn how to become a dynamic leader. So leadership is personal and also professional. Personal, lead. You can't lead others until you lead yourself. So learn how to lead yourself. Learn how to work on you each and every day, because then other people will tend to follow you. And then inspire your team around you with a purpose that gets them so excited they can't wait to get out of bed and come to work each day, because they love being a part of what you're doing. And they will help build your business for you. That's the exciting part about it. And number 3 is always hustle, but hustle to the point where you have balance in your life. You can still have a great family, great relationships, and great health. You don't have to suffer and sacrifice everything on the hustle to success if you're mindful and intentional to have balance in your life. What is your greatest failure story? What did you learn and how did you recover from it? The greatest failure story is, it was back early on in my early 20s, and I was struggling, dealing with some past pains and injuries from as a young kid, and I was dealing with lots of anger, and this anger was incredibly destructive. Anger is kind of like a boat in a lake. As the captain of the boat, you can't see all the turbulence behind you. All you see is the smooth lake in front of you. But the weight behind you from your anger is just leaving everything and everyone behind you just in a really bad state. So I had to literally bottom out from this anger, so I can begin to understand what was feeding it, and then begin to work on me
to turn that anger into love, turn that anger into empowerment, and use that as the fuel to build my success in the future. What are the top three success? Excuse me. What are your top three success secrets that others can model from? Work on you, right? Every day, take time to invest in your own mental well-being. If you get up each and every day and put about 10 to 15 minutes in to create the day in your mind first, get centered on the emotions and the actions you want to take, you will win more days than you lose. And even the days that you struggle, you're going to have the skill sets to overcome and course correct them much quicker. So always work on you. Number two is be in the service of others. When you serve others and create incredible value, there's no way that you can't be successful, because the universe has a law called what goes around comes around. And when you give for the sake of giving, you will receive in return way beyond you could ever imagine. And number three is be humble. Be humble. Humble to the effect that, you know, success is a team effort. And when we look at success, it's something that we can do collectively. And as a result, it's not about me. It's about the collective group and what we accomplish together. And that's one of the strengths of as a great leader is the level of humility and praising others for the success of the organization. We are about to move into, excuse me, lightning round. That means quick question and quick answer. Are you ready? Yes, I am. What are you grateful for today? It's a question I ask every single morning, and each day it always centers around my family. They are the core of my why. They're why I get up each every day, and I work every day to be a better person than I was yesterday. So family. How young are you? I'm 18 with 39 years of entrepreneurial experience. Wonderful. What do you want to do when you grow up? I never want to grow up. I want to continue to be a kid at heart, enthusiastic and energetic, and always pursuing greatness. How do you overcome a challenge life throws at you? It's my AQ. It's my adversity quotient. I work really hard to shift the mindset of adversity as a challenge to an opportunity. I embrace adversity as an opportunity to learn and grow to make me a better person. And when I shifted that mindset, adversity stopped being a negative and turned into a positive. And then it becomes very easy to overcome adversity. How do you start your day? Each morning I get up and I go into my special office. There's a room in there, and I start with identifying my two most important tasks, the three things I'm grateful for. Then I visualize my day and my outcome. I say my affirmations, and then I'm ready to rock and roll and hit the day head on. So it's my morning 10-minute ritual. I call it my 10 by 10 formula. What is the advice you will give to younger yourself? You know, it's funny. I was just thinking of this question not long ago. Really don't sweat most of the stuff you sweat. Most of the things we give energy towards just doesn't matter. Once you have a revenue generating idea, how do you convince your significant other? I'm so blessed. She trusts me implicitly. Not that every idea I've had has been a home run. However, she knows a majority of them have been pretty good. So she just lets me roll with it. I'm grateful for her. What is the impactful business book you have read, and what did you learn from it? Can I see the cover, please? Sure you can. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. At 17 years old, I was in my high school library and I walked past and I saw this book. And it was ironic because I had never checked a book out of the library prior to that. I read that book from cover to cover and it changed my life, because I learned that success starts between the 6 inches of your ears. And
In Napoleon Hill's book, he talks about how he studied successful people, what were the most common traits. And that's what I try to emulate in my life and teach to my clients. Why being impactful is important to you? On this journey of life, there's consumers and then there's givers. I want to be a giver. I want to be someone who leaves the world a better place than I came into this world. And being impactful means that my life mattered and that I impacted as many people as I possibly could. And so therefore, it was a life well lived. Who is your living mentor and what's the impact? I have many. But one that comes into mind, my real first true mentor was my father-in-law, Dr. Joe Siddique, who taught me what it was like to be a professional and how to be an entrepreneur and how to serve people and love people unconditionally. Incredible man. What do you want to be remembered for? Just somebody who cared, somebody who really had the interest of others at heart and made the people around them better by my presence. Who is your ideal client? My ideal client is the professional, the entrepreneur who really understands that personal growth and professional growth are synonymous. And they want more out of life than life is currently giving them. They want to have the kind of balance in their life with their family, with their health, physical and mental. And I want to help them share and give them the tools necessary to create a killer business and yet have an absolutely great personal life. So growth-oriented person. How can we support you? Well, first of all, I want to thank you for having me on today. It's been great. Please check us out at powerpassionprosperity.com. You can find our podcast, and it's on all podcasting platforms, or you can follow me at Dr. J. Laguardia on Instagram, LinkedIn, or Facebook. And I welcome anybody who wants to check us out. I'll answer any questions that you might have. We are about to wrap up. I'd like to have your few words about your today's guest experience on the show. Here is my question. What would you say about your today's guest experience on the show? Well, I would say that my experience on this podcast is unique in a sense. It's very organized, incredibly prepared. It makes the guests feel very comfortable knowing how the process is going to go, what the questions are going to be, and it's just it's a fun give and take. So I think Siddique, you and your team do a wonderful job. Thank you. What would you say as a final word? Live life to your fullest. We get one go around. Don't play small. Mediocrity is a sin. Step up to your greatness. Thank you so much, Dr. J, for sharing your wisdom with us today on the behalf of Growth Hacking Secrets community and our entire team. We really appreciate you. This is Mohammed Siddique signing off from Atlanta, Georgia. Until the next episode, all good wishes. Thank you so much, Doctor. I really appreciate it. Let me say this. You are not as good as you think. You are better. Thank you. You're very kind. Yeah. So any idea when you will have the summit? Like approximately a month, you know? Yeah, I think we're looking either the end of July or August. Okay. So I'll follow back up with you here in the next couple of weeks. I've got some travel and speaking events I've got to handle, but Okay. I'll follow up shortly. Understood. Dr. J, I appreciate it very much. Thank you so much. Have a great Take day. care. Thank you. Bye-bye. हाँ जी, अतर शाह, अवैस, इब्रार, हाँ जी, अतर शाह क्या सीखा है? डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस काफ़ी रिच है
और मैंने अभी बीच में मिड में ज्वाइन किया है। But that's not the learning part. That's not the learning part. Just focus on the what the question is. Everything else is irrelevant. मतलब इसमें बहुत एक ही focus है, क्या सीखा है, that's it. गुड कन्वर्सेशन। Okay, good. इब्रार, आपने क्या सीखा है? सर उसके जो उसने 3 चीजें बताई थी वो काफी इंटरेस्टिंग लगी हैं कि आपने सबसे पहले अपने दिन शुरू करने से पहले उसको आपने ज़हन के अंदर एक दफा उसको विजुलाइज करना है। उसके बाद आपने जो आप वैल्यू आप दूसरों को गिव करते हैं, मतलब आपने उसके ऊपर अपना करना है कि विदाउट एनी कॉस्ट, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम दूसरों को देना सीखें। और वो जो उसने एग्जांपल दिया व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, उसका बहुत इसने अच्छा इसको कनेक्ट किया है इसके साथ। ये 2 चीजें सर स्टैंड आउट की हैं इसके सारे। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान में लोगों को समझ आ जाए तो यहाँ तो हम मतलब जिंदगी बदल जाएगी सबकी, हैं? ऐसा है या नहीं? हाँ, लेकिन चंद लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी आम एट लार्ज तो नहीं, इस तरह नहीं है ना। ठीक है, हाँ जी अवैस। सर पहली चीज तो शुरू में गुड टू सी यू, और दूसरे नंबर पे डोंट बी सीरियस जो आपने इंटरव्यू शुरू करने से पहले करा था। अच्छा। और जो सर ये क्लाइंट है इसको दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि इसको क्लाइंट चाहिए, अगर चाहिए तो हम इसको क्लाइंट डिलीवर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें देख के एंड पे उसके साथ फॉलोअप रखनी है कि नहीं रखनी है, उससे दौरान ही हमने सोचते हैं। हाँ, तो फिर आपने क्या क्या सोचा है, क्या देखा है कि मैंने फॉलोअप क्यों नहीं रखा, या मैं भूल गया हूँ? तो सर आप वो नहीं, लेकिन सर जो मैं साथ वो काम कर रहा है ना, तो वो साथ में फंस गए ना मेरे नाल मल्टीटास्किंग तुम करोगे तो फंस जाओगे उस टाइम, 1 सेकंड नहीं लगता। क्योंकि मैंने पूछ लेना, मैं एग्जैक्ट गल पूछ लेनी है ना, एग्जैक्ट सवाल दा जवाब तो फोकस तो बगैर तो आप कर नहीं सकते। ऐसा ही हैं? ये चीज है, ऐसे ही। अच्छा, आप सीखना चाहेंगे मैंने क्या सीखा? मेरे सीखने वाली चीजें इंटरव्यू के अंदर कोई नहीं होती। 99% जो बात कर रहा है मुझे पहले पता है। 99% गैस जो बात कर रहा है वो मैंने पहले किसी से सीखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, जो बुक की बात कर रहे हैं ये बुक बहुत सारे लोग बता चुके हैं। ठीक है, और ये जो गिवर की बात है, आई डोंट हैव टू ब्रैग अबाउट माय सेल्फ, ये सारे लोगों को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, गिवर वाली बात है ना, इसे लेने वाली क्या चीज है, मतलब आई एम ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इट। वो बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है, उसमें फिर सीखने वाले मैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो। ठीक है, आई कैन डू इवन लॉट बेटर। मोर यू गिव, यूनिवर्स में चीजें ऐसी हैं, ये लॉ ऐसे बना हुआ है कि यू गेट मोर ऑटोमेटिकली, नॉट फ्रॉम द सेम पर्सन, डोंट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम द सेम पर्सन, स्टार्ट गिविंग आउट। ओके, नॉलेज है, दुआ है, आई डोंट रियली केयर व्हाट यू वांट टू गिव आउट, even a good thoughts matters, does not matter what you can give from your position. ठीक है, you have so much to give, you have no idea how much you can give। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो तू अगर तू अल्लाह ते यकीन कर दे, अल्लाह मैंने जो तू सांस दिता है, हेल्थ दी है, मूवमेंट है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। he can't even walk। समझ गए, गिविंग इज नॉट मनी, हमारा फोकस पैसों पे होता है ना। देयर इज सो मच यू कैन गिव टू पीपल। ये जो बुढ़े बंदे हैं घरों अपने घर में हैं या रिश्तेदारों में हैं या उस कम्युनिटी में हैं, दे फील लोनली ऑल द टाइम। डू यू नो दिस? उनके बच्चे कहते हैं हाँ बाबा है, तुम्हें गल पहले सुनी हुई है, और ठीक है ठीक है ठीक है, चाह दिया, रोटी दिया, पानी दिया, तो बेसिकली बात खत्म, उससे बात करने को कोई तैयार नहीं है। अतर ये बात ठीक है या नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, आप उसके साथ बैठे, सवाल क्या पूछेंगे? बाबे से क्या सवाल पूछेंगे? बाबा मीन जो बंदा बैठा है क्या पूछेंगे? अतर आप उससे मिलेंगे तो क्या उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके फेलियर्स जो वो शेयर करना चाहता है। हाँ, तो लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस ही लिए। अच्छा, वो तो ये करना चाहता है, लेकिन आपके लिए विजडम जो है ना वो उसमें है, एक ही सवाल पूछ रहा है। उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, सराइकी हो, पश्तो हो, डज नॉट मैटर। ठीक है,
कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। We all have a regret, है या नहीं? वो आपने सीखना है। वो कहेगा पुत्र मैंने बीए किया था, अच्छा होता है मैं एमबीए कर लेता तो मैं एज ए बैंक में ब्रांच टेलर भी रिटायर्ड हो गया, वरना मैं वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बन जाता। ये रिग्रेट है उसका या नहीं? ठीक है। मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको पढ़ाते पढ़ाते दरमियान में वो पैसों का मसला पड़ गया, उनको दरमियान छुड़वा के मैंने रेडी लगवा दी। यू नो, ये इट कुड बी एनीथिंग। या मुझे वो गोरे आए थे, मुझे मौका मिला था, मैं वहाँ पे मजदूरी कर रहा था, वो कह रहे थे मैं आपको इंग्लैंड ले चल जाता हूँ, मैंने अभी ना कर दी। मैंने गोरे गैर मुसलमान मुल्क नहीं जाना, काफिर मुल्क। इट कुड बी एनीथिंग। और मेरे साथ कुछ लोग चले गए थे, आज माशाल्लाह उनकी उधर भी कोठियां और इधर भी कोठियां, हम उसी 3 मरले के मकान में रह रहे हैं। आई कैन मेक अप ऑल 100 आंसर्स ऑन दिस वन। ये सारे रिग्रेट आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे? एंड हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम समवन रिग्रेट, that is the real wisdom you are gaining it from somebody. Always ask about their regret. उस बुढ़े बंदे को आपने एक ही सवाल पूछना है, सवाल पूछ लेना जो जुबान उसको समझ आती है। अपनी जुबान नहीं, जुबान आपकी वो है जो उसको समझ आती है, जैसे आप बात कर रहे हो। आपकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मैं आपसे उर्दू पंजाबी में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ वो आती है। ये जो लोग वाच कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो $300,000 वाला क्लाइंट आता है, मैं उससे उससे लेवल भी बात करता हूँ फौरन, क्योंकि उसको वही जुबान समझ आनी जो मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसको मैं इस जुबान में बोलूँ आम अल्फाज में तो उसको समझ नहीं आएगी। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करना पड़ता है। तो यू ऑलवेज स्पीक अ बायर्स लैंग्वेज। बायर वो है जिससे आप बात कर रहे हो, आपने वो जुबान बोलनी है। उसमें सिर्फ लैंग्वेज नहीं है कि सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है या इंग्लिश है ना, इट्स वे मोर देन दैट। जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है आपने उसी लेवल पे जाके बात करनी है, उसकी वेवलेंथ मैच करनी है। उसकी वेवलेंथ मैच करनी है। आप थोड़ी देर पहले उसको रीड करें, जो अल्फाज वो, वी ऑल हैव अ रेपिटेटिव लैंग्वेज, वी ऑल यूज सिमिलर वर्ड्स ओवर एंड ओवर, जैसे ह्यूमन बिहेवियर है। आप उसको रीड कर लें, फिर आपने जब बात बतानी है तो मैक्सिमम कोशिश करें जो वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है उसी को इस्तेमाल करें वापस उसको, ठीक है। एंड आई डू इट विद ऑल ऑफ यू एंड ऑल द गेस्ट्स ऑल द टाइम, यू हैव नो आइडिया। अब आप इसके बाद इस पे गौर करना, आप नोट करें जब आप इंटरव्यू आज कर रहे हैं, स्पेशली प्री इंटरव्यू पार्ट जो आपने मिस किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरव्यू इटसेल्फ। इंटरव्यू में सो भी जाऊं फिर भी चल जाना है, सवाल उसके पास आ रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे लिखे, मुझे क्या सोया डम्बेस्ट टाइम ऑफ दिस टुगेदर। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी कर, एनी इडियट कैन डू इट, लेट मी टेल यू व्हाई, आई एम जस्ट क्लिकिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसे ही है ना। और ये आप में से कोई भी कर सकता है, सवाल क्लिक करना क्या मुश्किल, लिखा लगा है पहले है ना, मुझे टाइप करना, कुछ भी नहीं करना। और जो भी कह रहा है मैं उस पर कमेंट भी नहीं करता, मुझे आता है नहीं आता है, आई लर्न समथिंग न्यू, आई डोंट, दैट्स नॉट माय आंसर। आई हैव जीरो राइट टू से एनीथिंग। गेस्ट जो भी बात करे आप एग्री करें या ना करें, आपका कोई रोल नहीं है उसको कहने में कुछ। इंटरव्यू में 3 लोग होते हैं, अतर कौन से होते हैं बताएं? इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूई होता है और ऑडियंस। हाँ, मैं 3 का ऑडियंस तो बड़े मिलियन भी हो सकते हैं। हाँ इब्रार, एक को जो इंटरव्यू कर रहा है और एक जिसका इंटरव्यू हो रहा है और एक जो बंदा सुन रहा है। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। ये 3 लोग होते हैं, सुनने वाला ऑप्शनल है, इट्स नॉट गारंटीड। मुझे कई लोग पूछते हैं जो बड़े बड़े मतलब कैलिबर के लोग आते हैं, वो कहते हैं कितने लोग आज करेंगे, बिकॉज दे वांट टू नो, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ देयर टाइम। मैंने कहा 2 कंफर्म है, तीसरे के लिए वी नीड टू वर्क टुगेदर। कहते हैं वो कौन है? मैं कहा आई डोंट नो, आपके कंटेंट की क्या क्वालिटी है, शायद उससे कोई एक आध बंदा सुनने के लिए आ ही जाए। प्रेशर इज ऑन यू नॉट ऑन मी, दे ऑलरेडी नो मी। समझ गए? इसके बाद बंदा हाँ कर देता फौरन,
वरना कहते हैं oh no I have been in this for X number of years, I have done this much interview and I have a million people watching and at the end not even 2 people watching. Why you need to say anything? I say my goal is to bring the third guy. Let's be together. Hopefully we can bring someone. I don't know. I can't guarantee it. ठीक है, ये सुन के कभी किसी ने ना नहीं की कि मैंने नहीं आना, ना ही पूछता कितने लोग आज करते हैं, मुझे क्या पता, सारा कोई पब्लिक है, जाके देख लो, जीरो भी है उसमें बहुत ज्यादा वाले भी हैं। वो जीरो क्यों आया, उसके इतने ज्यादा क्यों है, आई हैव नो आइडिया। मैं तो उसी तरह शॉप होता, उसी रेड शर्ट में शॉप होता, वही सवाल पूछे थे, इसमें मेरा तो रोल ही खत्म हो गया। ये बात सही है या गलत है, बताएं आप अबरार? बिल्कुल सही है। इसमें तो कोई मेरा क्या रोल है, इसमें मेरा जो रोल है जो भी है जैसा भी है वो तो वही सेम है ना, मेरा रोल है ही कोई नहीं इसके अलावा, इसके ऊपर अब है बाकी सारा उसने करना। इसलिए मैं कहता आप बताओ कितनों को लाओगे, किस तरह की बात करोगे, मुझे तो आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स रियल नॉलेज। ऐसे पता चलता है ना, आपको जो मर्जी को सवाल पूछना है, आपने सवाल को डिफ्लेक्ट करके उस पे बंदे पे गैस पे डालना है, दैट्स स्किल यू वांट टू लर्न में हाउ यू इंटरव्यू समबडी। मैंने कभी किसी गैस का सवाल आंसर नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन। वो इतना अच्छा सवाल पूछेगा, मेरे बारे में पूछेगा, मैं उसको ग्रेट क्वेश्चन कह के उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन उस पर मारूंगा, उसी सवाल का जवाब उससे लूंगा, क्योंकि होस्ट का काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं है। उस रोल में दैट डजंट मीन आई डोंट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, नो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कोई मसला ही नहीं, लेकिन उस रोल में मेरा सवाल का जवाब देना बनता नहीं है। मैं होस्ट हूँ, वो गेस्ट है, गेस्ट का काम जवाब देना है, होस्ट का काम सवाल पूछना है, ये रोल है ना। अगर ये किसी को डिफ्लेक्ट करना हो सवाल, तो मैं कहता लास्ट टाइम आई चेक्ड, आई वाज टोल्ड आई एम द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, आई एम नॉट अ गेस्ट, उसे हंसना शुरू कर देता है। So you have to know the answer, 360 angle of this whole thing. That's over the years you will learn it. It's not a one-day process. अभी ये आया, ऐसे मैंने सेल्फ इनवाइट कर लिया, वो सबमिट करता है, उसमें 5-6 स्पीकर लाते हैं। आपने ये देख लिया ना अबरा, मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट उसमें किया या नहीं किया, बताएं? किया सर, एंड में अपने गैप करते हैं? maybe if you need an other host I can join. No, I didn't say that one. मैंने कहा जब एक आध कोई मिसिंग होगा, ठीक है, अब वो जब मिसिंग होगा तो वो कान में गौर से सुनेगा, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मिसिंग अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। आई एम हेल्पिंग यू टू फिल अप दैट गैप, समझ गए? वो हंसना शुरू हो गया, उसको पता चल गया, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इनवाइट। वरना क्या है, हाँ आप मुझे फेवर दे सकते हैं, मैंने आपका इंटरव्यू किया, प्लीज मुझे भी वहां पे गेस्ट ले लेना, अब एक अप्रोच ये भी तो है ना। ठीक है ना, वो करेगा नहीं करेगा आई डोंट केयर, जहां मौका मिला आपने कुछ कर लेना, एक लाइन में, नॉट अ स्टोरी नहीं। Everything you want to say, that's your learning lesson, everything you want to say has to be one line, one liner answer, everything. Question is a one liner, answer is a one liner, that's what you want to work on to achieve that. और हर सवाल का जवाब आप जब स्टोरी से बता सकोगे, that's the ultimate your skill level, and I'm still working on that. I don't have answer to every question in story. If you don't have an answer right now for with any question, you can't answer it with a story, that means you have not done it. It's all theory. Story has impact. गौर करें, आपका कोई भी मजहब है, कोई भी फिरका है, शिया सुन्नी व्हाटएवर, यू नो, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। मजहब मौलवी क्या करता है, स्टोरियां सुनाता है या नहीं सुनाता? जुम्मे का खुतबा स्टोरियों से होता है या नहीं होता? साहबा कराम ने ये बताया, फलां पे ऐसे गए, ये सारी स्टोरियां हैं या नहीं है? जो उस पर बिलीव करता है उसके लिए वो रियल है, जो उस पर बिलीव नहीं करता उसके लिए वो रियल नहीं है। ना आपने देखी ना उसने देखी, बिलीव सिस्टम का फर्क है, बाकी से कुछ नहीं है ना।
अगर सारे बिलीव कर दें तो वो सारे एक ही फिरके के होते लोग। कुरान में भी सारे स्टोरीज हैं साहब। ठीक है, और वो एक ऐसी चीज है, कितने मुसलमान हैं सारे फिरके कंबाइन कर लें, बिलियन प्लस है ना, कब से चल रहा है। अब उसको फैलाने वाले भी चले गए, लेकिन आगे से वो चल बिलीव सिस्टम कर रहा है, क्योंकि स्टोरी का इम्पैक्ट है। और दुनिया के हर मजहब के बहुत सारे लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं मजहब टीच नहीं कर रहा, मैं उस मजहब से सीखने के लिए अपने बिजनेस को आपको रिलेट कराना, सो यू गेट द आइडिया। ये जब कहते हैं अच्छा ये सवाल है जी, हमारे साहबा कराम ने, हमारे नबी ने इस तरह इसको किया, वो क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया तो आपने उसको फॉलो करना है। फिर आपको पता है कि ये इसकी वेल डिफाइंड, ये इम्पैक्टफुल तरीका है ऑलरेडी, यही है ना। जब आप इसको बिजनेस में, ये जो हम एंटरप्रेन्योरशिप है, फ्रीलांसिंग है, कॉल सेंटर है, यू नेम एनीथिंग, अमेज़न है, जब वो बताए कि ये प्रोडक्ट का गारंटी क्या है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी, नहीं नहीं काम करेगी, वो तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ FAQ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। So why you're trying to answer the same question which you already answered online? That means that did not answer their question. असल गल तो ये है ना, फिर तुसी वही कॉपी पेस्ट करके रिपीट करके भेज देना, उन्हें बाय भी कर लेना, जो नहीं हुई तो उन्हें ही नेगेटिव रिव्यू देना है अमेज़न पे। अतर ये बात ठीक है या नहीं? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपनी सवाल का, feelings को अगर सवाल आप किसका दें, जैसे ग्रेट क्वेश्चन आपने पूछा है, एक कैथी थी, उसे ह्यूस्टन से थी, उसका भी यही सवाल था, जब उसने बाय किया तो ये 5 स्टार उसने रिव्यू दिया है। अब आपने सारा बोझ उठा के कैथी पे डाल दिया है, और कहते ओह माय गॉड दैट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन, मैं स्केप्टिकल थी, अब ये हो सकता है, एंड माय गोल इज टू वर्क विद यू, गेट अ 5 स्टार रिव्यू फ्रॉम यू, आर यू नेक्स्ट। इन दोनों सवालों जवाबों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है ना। और दोनों जो आपके पास है, इसमें आप वो दे रहे हो जो कुकी कटर है, इसमें आप वो कैथी की एग्जांपल दे रहे हो, फर्क है ना। So who are the best salespeople? Not the guy working in a call center. Your customer are the best salespeople on the planet. आपने अपने कस्टमर की स्टोरी बतानी है किसी भी सिचुएशन में, आपने अपने कस्टमर की स्टोरी बतानी है। दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट दैट फर्स्ट विक्टिम। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है, दैट मीन्स यू हैव नो केस स्टडी फॉर दैट, और आपके पास दे विल बी द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दैट सिचुएशन, इवन दो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स। उस सिचुएशन में अगर होता तो आप बता देते ना, नहीं बताया तो दे हैव द फर्स्ट विक्टिम, एंड नोबडी वांट टू बी योर फर्स्ट विक्टिम। हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आए हैं, 5-10 साल उसने अपनी जिंदगी के लगा दिए हैं, बाद में कहता है जी मैंने इंग्लैंड से ये किया, KE से मैंने ये किया, फलां जगह से ये किया करके, बाय द वे यू आर माय फर्स्ट पेशेंट हूँ, मुझे बताएं आपका किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा उससे हार्ट अपना करवाने का। आई ऑलरेडी नो द आंसर, इज राइट। आधा हार्ट अटैक कुर्सी में हो जाए। रियलिटी ये है कि बहुत जगहों पे जब ये चीजें ऑपरेट हो रही होती हैं, हार्ट का हो, पेन का हो, यू नेम एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर द फर्स्ट विक्टिम। ये सारों के पहले पेशेंट कौन थे? बंदा ही था ना कोई, नहीं जी वो बड़ा वाला बंदा सुपरवाइज कर रहा होता है, एक्सपीरियंस सब कुछ जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसका फर्स्ट विक्टिम तो था कोई कि नहीं। ठीक है, होपफुली दैट हेल्प्स। ओके, देखिए कोई इंटरव्यू है इसके बाद या नहीं। I have 4 minutes. Oh my God. Okay, interview is done for the day, but I have a number of things going on. Yeah. I have 10 more meetings to go. Every
out of interviews. Every meeting is different, different topic, different challenge, different something to resolve. Okay, in fact, let me show you so that आप कहेंगे हमें पता नहीं show एक पता नहीं है भी कि हमें गल्ला करी जाते हैं. ये है ना, नजर आ रहा है? 3 मिनट बाद ये शुरू हो रही है, इसके बाद फौरन बाद वो शुरू हो रही है, ये फिर ये डिफरेंट कलर्स हैं, फिर ये और शुरू, बैक टू बैक है तीनों. ये 10 मिनट की है, वो मेरे 15 मिनट की, 10 मिनट की है, ये आधे घंटे की है, फिर दरमियान में कुछ गैप है. आई एम गोइंग टू ईट समथिंग, देन ये है, देन आई एम गोइंग टू स्लीप इन दिस टाइम. ठीक है, देन ये 1 आवर इंटरव्यू है, पता नहीं मैंने इंटरव्यू देना है, ये घंटे का क्या है, 1 सेकंड में देखूँ क्या है ये, ओपन करके, मुझे पता भी नहीं क्या टॉपिक है. लकी ओके, ये देखें, इसने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, घंटे का टाइम है. I don't even have a question. I have no idea who I should be talking to, what will be the topic. I don't know anything. How good is that one? How do you prepare something like this? घंटा बोलना है, पता ही नहीं टॉपिक क्या है. ठीक है, और जो ही खत्म हुआ अगले मिनट 1 2 3 फॉलो अप है, फिर 2 घंटे की वॉक है, फिर ये शाम को मिस्टर ओ के साथ घंटे की मीटिंग है. ठीक है, so I started my first meeting at